Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Minhajul Arabiyyah, and today we are going to learn 21st lesson. Let's practice. Hada waladun mujtahid. This is a hard-working boy. Al waladul mujtahidu mahbub. The hard-working boy is favorite. Lahu fawzun kabir. He has a great victory. Huwa masrurun fi kulli waqt. He is happy in every time. Al waqtu indahu shay'un samin. The time he has a costly thing. Dhalika waladun kaslan. That is a lazy boy. Al waladul kaslanu mazmum. The lazy boy is bad. Huwa mahzunun fi kulli waqt. He is sad in every time. Al waqtu indahu laysa bi shay. The time he doesn't have anything. Al fawzu lil mujtahid la lil kaslan. The success is for hardworking, not for lazy. Hadha waladun ghani wa dhalika waladun faqir. This is a rich boy, and that is a poor boy. As'ila, questions. Ayyu waladin mahbub. Which boy is favorite? Ayyu waladin madhmum. Which boy is bad? Limanil fawz. For whom success is? Manil masroor. Who is happy? Manil mahzun. Who is sad? Manil ghani. Who is rich? Manil faqir. Who is poor? Manil rasulul arabi. Who is Arabi prophet? Mal Quranul Kareem. What is the Quran Majid? Now let's translate Urdu sentences in English language. ये पानी है. This is water. ये मेहनती आदमी है. This is a hardworking man. अच्छा पानी वज़ू के लिए लाजिम है. The good water is compulsory for वज़ू. ये ठंडा पानी है. This is cold water. मेहनती
आदमी बुरा नहीं है। द हार्ड वर्किंग मैन इज नॉट बैड। वज़ू में बड़ा नफ़ा है। इन वज़ू देर इज़ बिग बेनिफिट। मैं लड़का हूँ। आई एम ए बॉय। सुस्त आदमी महबूब नहीं है। द लेज़ी मैन इज़ नॉट फेवरेट। मैं मुसलमान लड़का हूँ। आई एम ए मुस्लिम बॉय। इस्लामी तालीम बहुत मुफीद है। द इस्लामिक एजुकेशन इज मोर बेनिफिट। वो आदमी हैं। दैट इज ए मैन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अरबी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अरबी प्रॉफिट। वो दौलतमंद आदमी हैं। दैट इज ए रिच मैन। इस्लाम अच्छा दीन है। इस्लाम इज ए गुड रिलीजन। वो रंजीदा आदमी हैं। दैट इज ए सैड मैन। थैंक यू वेरी मच।